ठीक है चलिए, so we will now practice marketing case studies. ठीक है, चलिए, I will ask you some questions. Okay, this is the first question for you. इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है प्रमोशनल टूल. तो देयर आर 4 प्रमोशनल टूल्स, उसमें से कोई आंसर हो सकता है. एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस एंड सेल्स प्रमोशन. The Research and Development Department of Healthy Production Limited has decided to diversify from manufacturing health drinks to cereals made from millets. They are well aware of the fact that the company will have to communicate to the people the benefits of eating millets. For this purpose, they plan to sponsor various events like marathons, encourage people to switch to healthy eating through newsletters. Can you tell me ये सब words अभी हम recently पढ़ रहे थे class में? Absolutely, public relations. तो public relations पे पिछली 2 classes हम बात कर रहे थे, and we talked about sponsoring events, even we talked about newsletters, brochures या कोई भी audio visual material जो company लेकर आती है लोगों के सामने. All these are a part of public relation. Also explain any 2 other promotional tool that can be used by the company apart from the one discussed above. तो आप कोई भी बोल सकते हैं. Any 2 other promotional tools, which one would you recommend? ओके, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग हम कह सकते हैं, या सेल्स प्रमोशन, जो भी. वी कैन से एनी, बिकॉज हम लोगों को कम्युनिकेट ही करना चाहते हैं कि भाई आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं प्रोडक्ट की. तो कोई भी 2 प्रमोशनल टूल्स आप बता दीजिए. डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए, तो बहुत अच्छे से हम आज प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे चैप्टर को. यहाँ पे अगर आपको याद होगा, आई जस्ट वांट टू रिपीट, हम यहाँ एक एग्जाम्पल देख रहे थे MCQ का. Tomato Limited, a food delivery service app, has recently faced criticism for the tampering of their product by their delivery boys. Tomato Limited decided to put a hologram seal on the food packets in order to protect the contents from spoilage, leakage, pilferage, damage, along with a tag with a safety warning for the consumers to check the seal. Which concept of marketing discussed above is performing the important function of communicating with the potential buyers and promoting the sale? याद है, इस पे हमने डिस्कस किया था कि इसमें कई सारे लग रहे हैं, but then we looked at the answer suggested by CBSE and that was labeling. You remember this? I just wanted to repeat it. Okay, और देखते हैं. So, buy one get one free is printed on the label of the package of a mosquito repellent. State the labeling function being performed. I will repeat. Buy one get one free is printed on the label of the package of a mosquito repellent. State the labeling function which is being performed here. Can you tell me? You can recall it in your mind, the labeling functions. Okay, Samriddhi, do you have an answer to that? Yes, this is the right answer. तो अगर हम अब लेबल पे कुछ लिख रहे हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक सेव ₹10 या फिर जैसे बाय 2 get 1 free, this is definitely helps in promotion of the product. I want to show you also here. जैसे लिखा हुआ है 40% extra,
फ्री टूथब्रश इन साइड। तो ये जो भी सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज होती हैं ये लिखी तो लेबल के ऊपर ही होंगी ना, तो इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज द फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, दिस लाइन, ये लाइन अभी आपने रिसेंटली कहीं पढ़ी है, मुझे बताना कहाँ। Labels perform number of important functions relating to communicating with the potential buyers and promoting the sale of the products. कहाँ पढ़ी ये लाइन? Yes, the MCQ that I showed you ना, जो अभी मैंने डिस्कस किया उसमें ये लाइन हमने पढ़ी। Which of these is performing the important function of communicating with the buyers and promoting the sale of the product? तो अभी जो MCQ पढ़ा वहां से ये लाइन बेसिकली सीबीएसई ने जो क्वेश्चन ड्राफ्ट किया वो इस लाइन को यूज करके किया, राइट? यस, सो दैट इज दिस, performing the important function of communicating with the potential buyer and promoting the sale, right? चलो आगे चलते हैं, मोर केस स्टडीज। अच्छा, अगर कुछ ऐसा आ जाए बच्चे, an important task in the marketing of goods relates to designing a label as it provides useful and detailed information about a product. In the light of the above statement, draw a label for a liquid soap and highlight the important information to be provided on it. Now, this was a very different question that CBSE had never asked before this. वो कह रहे लेबल ड्रॉ करके दिखाओ। अगर आप पेपर में होते क्या आप कुछ ड्रॉ कर पाते? विषय आपके इंग्लिश में क्या कुछ ऐसे ड्रॉ करने होते, पोस्टर्स और सम सॉर्ट ऑफ, देयर आर सम ड्राइंग्स, इज इट? When I was in 12th there were some posters that we had to make, तो वहां से थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती। जैसे उन्होंने दिया है कि आप एक लिक्विड सोप का लेबल बनाओ। नाउ क्योंकि एग्जाम से पहले आपने एक प्रैक्टिकल बनाया होता है, फाइल बनाई होती है और उसमें कुछ बच्चों का मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट होता है, सो उनको तो ये पता होगा बिकॉज उन्होंने एक प्रोडक्ट खुद से चूज किया होगा, उसका सब कुछ बनाया होगा, लेबल एंड पैकेज एंड एवरीथिंग। बट अदरवाइज कैसे उन्होंने लिखा है? प्राकृतिक, जैसे दिस इज द नेम दैट दे हैव गिवन, तो इससे हम कहना चाह रहे हैं कि आवर प्रोडक्ट इज वेरी नेचुरल, एनवायरमेंट फ्रेंडली, प्राकृतिक। प्राइस लिख दिया जैसे ₹40, ये लेबल है which you will put on the package of a liquid soap. Suitable for all skin types, contains aloe vera extracts, keeps you close to nature, 100% herbal hand wash, provides everyday protection against germs, directions for use, yes ये जरूरी होता है। Press nozzle gently to get liquid hand wash, apply on wet hands, वैसे आगे भी लिखना चाहिए। Then lather and wash off. Caution, for external use only, keep out of reach of children unless adult supervision. Avoid direct contact with eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water. If persistent irritation occurs, seek medical attention. ऐसा ही लिखा होता है मोस्टली। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, विषय हमने पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरर का एड्रेस वगैरह भी लिखा होता है लेबल पे। Manufactured by Prakriti Industries Limited, Okhla, Phase 1, New Delhi. Weight 200 milliliter. Manufacturing date best before 36 months from the date of manufacture. Very, very important information to be given on the label. For consumer complaints or suggestions, contact consumer care, call this or write to this for whatever questions you have or suggestions you have. So do you get an idea, अगर आपको लेबल ड्रॉ करने को आ जाए तो कैसे कर सकते हो? Were you prepared for such questions? But आपको सरप्राइज दे सकते हैं स्कूल वाले भी।
तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए। और कोशिश किया करो थोड़ा लेबल पढ़ा भी करो, रियल में भी जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो उनके, क्योंकि उससे एक तो पता भी लगता है प्रोडक्ट के बारे में, और थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स भी हम देखते हैं प्रोडक्ट के, तो हम एज एन अवेयर कंज्यूमर वी शुड एक्चुअली डू इट। यू नो, व्हेन आई वाज younger, I had this habit of reading everything at the back कि क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर। तब इतने ज्यादा मोबाइल फोन्स तो होते नहीं थे कि हम टाइम पास कर सकें सोशल मीडिया पे। सो व्हेन आई वाज ऑफ योर एज प्रोबेबली आई वुड जस्ट रीड, ओके क्या लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स के बैक पे, क्या लिखा है। ऑल दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी, समथिंग वेरी सिली बट यस। तो आप भी थोड़ा बहुत देखा करो ऑल्सो, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट? ओके, चलिए आगे बात करते हैं। Here, you have to talk about the marketing management philosophy. Mansi, a shoe manufacturer for school students, decided to maximize profits by producing and distributing shoes on a large scale and thus reducing the average cost of production. Which one? Yes. Can you recall, Sarah? मेन फोकस मीन्स एंड एंड्स। तो ये तो वैसे आपको मैंने वो टेबल लर्न करने को कहा है, यू हैव टू लर्न दैट टेबल बाय हार्ट। एंड मेन फोकस और मीन्स एंड एंड्स आपको सब कुछ करना है, उसी टेबल से आप आंसर दे देंगे। लाइक मीन्स हो गया अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड हो गया प्रॉफिट थ्रू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एंड मेन फोकस इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है, ओके। Let me share some more case studies with you. जैसे ये question I'm showing you here. Name the concept related to the activities mentioned in the above paragraph. Now, Vishi, concept is any main heading. You know that. Concept कोई भी main heading हो सकता है. तो देखते हैं. Timeline Watch Manufacturing Company is a renowned company marketing watches. It performs various activities like market analysis, product designing or merchandising, packaging, warehousing, branding, pricing, promotion, and selling. The company maintains good customer relations through various follow-up activities. This helps the company in procuring repeat sales orders. Name the concept related to the activities mentioned. Second part, कई बार हमें second part से भी आंसर करने में हेल्प मिलती है। एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट यू हैव आइडेंटिफाइड। तो कोई ऐसा वर्ड होगा जिसके आपके बुक में फीचर्स भी गिवन है, तो बताइए क्या लग रहा है आपको? एब्सोल्युटली। एंड गिव एनी टू फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। करेक्ट। और वैसे और भी है, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग एंड एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, सो डू यू गेट एन आइडिया? ऑलराइट, लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ। इसमें हमें आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है द कम्युनिकेशन टूल। तो कम्युनिकेशन टूल आपका वही प्रमोशन टूल होता है, देखते हैं। Coconut Joy Limited are the manufacturer of vegetarian frozen dessert food products made with coconut milk, agave syrup, and other certified ingredients. The founders of the company, Lovely and Lalita, originally developed this treat to meet their own needs, but found that their friends and families around were also keen to use the products. It was not only the vegetarians but also those who could not get enough environment-friendly, sustainable food that appreciated the product. तो ये कोई dessert बनाते हैं. It did not take long for Lovely and Lalita to recognize the potential of their little venture. In the beginning, they started from their home with the product being sold through local family parties that enable guests to personally meet the owner.
This helped to establish strong connections with the prospective buyers, and the company could put the product on shelf of natural food store. The company used all marketing activities to grow and expand. The company began sponsoring booths at festivals, drawing attention to its newly created vegetarian products. It also disseminated, ये words आप ध्यान रखें कहाँ पे पढ़े हैं, relevant information to media about its products and the people who helped in building the company's reputation. Lovely and Lalita were invited for an interview with one of the leading TV channels in which they talked about their environment-friendly vegetarian products. To show its gratitude to customers, local business and government officials who supported the company from the beginning, Coconut Joy Limited hosted a gala event and involved all of them to raise funds for a few local NGOs. The company also asked its fans and customers to send songs and poetry conveying their impression about Coconut Joy's limited products. Tell me. Absolutely, public relation. They have mentioned so many things related to it, like sponsoring certain events, like interview with the TV channels, like disseminating information to media. देन NGOs के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तो जैसे कोई सोशल कॉज के साथ भी आप एसोसिएट हो रहे हो. एवरीथिंग कन्वेज टू अस दैट दिस इज पब्लिक रिलेशंस. फिर आगे उन्होंने पूछा ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ द टूल. तो हमने रोल भी पढ़ा है, वेर इन वी टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट पब्लिसिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, press relations, lobbying, and counseling. You remember that? Okay, let us talk about this. Explain any two important activities that Anushka and Sumit will have to be involved in making the goods available to customers at the right place in the right quantity at the right time. तो पहले तो आपको इससे कौन सा एलिमेंट याद आ रहा है? करेक्ट. तो उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट दो एक्टिविटीज आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करनी है. Every time I traveled, people asked me to bring them chips, khakra, and pickles from all over the country, says Anushka. Finally, she and her colleague Sumit decided to make a business out of it. They launched a Facebook page, asked people what they wanted, and came up with a list of about 100 places and tied up with 24 vendors to begin with. They were servicing people from Jaipur who wanted spices from Kerala, people from Panipat who wanted halwa from Jammu, and people from Delhi who ordered fresh tea leaves from Darjeeling. Okay. Through their business, they wished to bridge the gap between sellers and buyers. The business is now worth millions. Yes. Can you guess the two activities? Okay. So the answer given is transportation and warehousing, because यहाँ पे वो बात कर रहे थे जयपुर, केरला, पानीपत, जम्मू, Delhi, Darjeeling. Do you think transportation is involved? Yes, so transportation and warehousing, something different actually. This case study is a little different. वैसे ये CBSE sample paper का question है. Okay. Okay. 3 functions with reference to. Okay, we'll talk about this. इसमें हमें बताने हैं 3 functions of marketing with reference to the above paragraph. Functions of marketing आपको पता है, good morning, चाय पियो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, business studies पढ़ो, सो जाओ. Those were the points. Radhika was a student of business studies of class 12. Her father was a farmer who grew different varieties of rice and was well versed in the various aspects of rice cultivation. He was also selected by the government for a pilot project on rice cultivation. As a project work in business studies, she decided to study the feasibility of marketing good quality rice at a reasonable price. Now listen this line.
Her father suggested her to use the internet to gather customer views and opinions. यहाँ पे ध्यान रखना. She found that there was a huge demand for packaged organic rice. She knew that there were no predetermined specifications in case of rice, because of which it was difficult to achieve uniformity in the output. याद रखना, uniformity in the output. To differentiate the product from its competitors, she gave it the name Malabari organic rice and classified it into 3 different varieties, namely popular, classic and supreme, based on the quality. She felt that these names would help her in product differentiation. I think you can tell me the 3 functions. Yes, standardization के बारे में उन्होंने अलग से लिखा है, grading के बारे में अलग से लिखा है, but both we are going to mention in one point. Definitely branding is also there because she is giving a name to the product, which is helping in product differentiation and also gathering customers, analyzing market information. Okay. Now, अब ये जब क्वेश्चन आया तो कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया कि what are they asking. The above paragraph describes the combination of variables used by Haryaram to prepare its market offering. Identify and explain the variables. तो बच्चों को समझ ही नहीं आई क्या variables मतलब what? But do you know? The elements, correct. Haryaram is a famous chain selling a large variety of products in the Indian market. Their products include chips, biscuits, sweets and squashes. इससे कौन सा element है? Product. It charges a comparatively higher price than its competitors as it sells quality products. कौन सा है? Besides, it offers regular discounts to its customers and easy credit terms to its retailers. It has 5, वैसे है इसमें भी, but आगे और clear हो जाएगा. It has 5 of its own retail shops. It also sells its products to various grocery stores so that products are made available to the customers at the right place in the right quantity at the right time. What is it? Place or physical distribution. It regularly uses different communication tools to increase its sales. Promotion. तो देखो आंसर में उन्होंने दिया है, प्रोडक्ट में लिखा है ये वाली लाइन, प्रोडक्ट्स इंक्लूड चिप्स, बिस्किट, स्वीट्स एंड स्क्वॉशेस. फिर प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है. प्राइस में चार्जेस अ कंपैरेटिवली हायर प्राइस. प्लेस में इट हैज इट्स 5 of its own shops and it also sells its products to various grocery stores. It regularly uses different communication tools to increase the sales, that is promotion. Do you understand? बच्चे उस दिन हम we were discussing the term 1 का sample paper which had MCQs. तो we did almost 30. मैंने बाकी आपको होमवर्क में करने को कहा था. Did you do those? क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मार्केटिंग के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको जरूर करना है. Okay, let's talk about this small little question. Identify the element of marketing mix. Zoom Udyog, a car manufacturing company, has started its business with Zoom 800 and slowly launched Zoom 1000, Wagon Z, Wi-Fi, etc. and offered various services like after-sale services, availability of spare parts, etc. Identify the element. Product. Please don't say promotion because this is after-sale service, handling complaints, availability of spare parts. This is product. And उससे पहले भी उन्होंने बोला है कि अलग-अलग कुछ बता रहे हैं. Zoom 1000, Wagon Z, अलग-अलग products, right? Then
नाउ अब इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं. Identify and explain the important product related decision that was not taken into consideration by the company. Product related decision मतलब क्या? I have given you what are product related decisions. भूल गए हो? BPL, product related decisions. Yes, अगर आप भूल गए हो, write in the top margin of your notebook because this is something important. Product related decisions पूछ रहे हैं तो BPL में से कुछ पूछ रहे होंगे. Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new products on the eve of Diwali which attracted many buyers. To meet the increased demand, the company employed children from nearby villages. Although the product was in great demand, appropriate safety warnings for use were not mentioned on the packets. That led to many accidents. Correct. Safety warnings were not given, which is a part of labeling. Yes, Samriddhi, can you understand that? So the answer is labeling. Okay. Now, इसी से कुछ मिलती जुलती case study. Identify and explain the product related decision because of which consumers preferred the products of ABC Crackers Limited. कुछ ऐसा product related decision जिसकी वजह से consumers prefer कर रहे हैं आपके products. ABC Crackers Limited, a firecracker manufacturing company, launched some new products on the eve of Diwali in the market, which attracted many buyers. Same सही लग रहा है question. To meet the increasing demand, the company employed people from nearby villages where there was a lot of unemployment. Because of the good behavior of the management with the employees, more and more people wanted to join the company. As the products were in great demand in the market, a competitor imitated the products. The product of the competitor were not accepted by the consumers as it was a status symbol to buy the products of ABC Crackers Limited because of their quality. Status symbol. Yes, that is branding. When we buy a particular brand because of its status symbol and of course the quality. Okay. Then कुछ इसी से related. Here. Explain any two product related decisions which the students had to take. Okay, two product related decisions. As a project work in business studies, the commerce students of Himachal Public School, Himachal Pradesh, thought of preparing apple jam from the apples grown in their school premises and sell it in the school annual fete. It approached the principal, who not only appreciated the students but also gave her consent for the same. The school decided to donate 50% of the revenue generated from the sale to a nearby orphanage. After the school fete, the school also decided to extend this project by providing employment to visually challenged and disadvantaged sections of the society on regular basis. वैसे तो बच्चे यहाँ पे कोई भी as such mention नहीं है. वो कह रहे हैं कि अब students को कौन से दो product related decisions लेने पड़ेंगे. मतलब कोई भी आप बताओ कौन से लेने पड़ेंगे. ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, कुछ भी हो सकता है. बट लेट्स से ब्रांडिंग तो है ही, क्योंकि आपको कोई नाम देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, कुछ तो नाम दोगे ना. पैकेजिंग भी देखनी पड़ेगी कि किस चीज में पैकेज करें. वैसे तो लेबलिंग ऑल्सो, बट दो बताने हैं तो कोई भी दो बता दीजिए. फिर वो कह रहे हैं suggest any two functions that the label of the jam bottle must perform. तो functions of labeling, क्या क्या जैम की बोतल पे लिखा होना ही चाहिए. कोई आप बताइए. लेबलिंग के फंक्शंस. डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन. तो ये जो फंक्शंस ऑफ लेबलिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज करें इसको. This describe the product and specify its contents, identification of the product or brand, grading,
हेल्प्स इन प्रमोशन जो अभी हम बात कर रहे थे, एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ओके. बिकॉज बच्चे वैसे तो हो सकता है, बट नॉर्मली अगर सोचे क्या जैम पे कुछ ऐसा हमको लिखने की जरूरत पड़ेगी? लाइक इसमें नॉर्मली होता है स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट, ऑन द सिगरेट पैकेट्स, या अल्कोहल लिकर पे कुछ, टोबैको पे, तो उस पे ज्यादा होता है ये द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, राइट? सो इस पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी, राइट? ओके, देन मूविंग ऑन. मैंने आपको लेबल दिखा दिया किस टाइप से अगर लेबल बनाने को आता है. ये क्वेश्चन इधर भी गिवन है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस. आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलॉसफी. आपको पता है, as a global leader in the consumer electronics and entertainment industry, Sony has set forth Road to Zero environmental plan to achieve a zero environmental effect by the year 2050 by producing world-class products in a manner that both protects and promotes a healthy and sustainable planet. Societal marketing, correct. Very good. Okay, then let's talk about this. Name the other two levels of packaging that the marketers may be using beside the immediate package. वैसे immediate package कौन सा level होता है? As the number of people making online purchases has increased many folds, there is a growing concern about the disposal and management of packaging waste. Every item bought is delivered with excess packaging, and sometimes even non-biodegradable materials are used. Name other two levels of packaging that the marketers may be using beside the immediate package. Definitely which? ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली व्हेन ऑनलाइन ऑर्डर हम करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी होगी ना उसकी, सो दैट द प्रोडक्ट इज नॉट ब्रोकन और समथिंग. डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू पॉइंट्स हाईलाइटिंग द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. कोई भी बता दो फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग. करेक्ट. चलो यहाँ देखते हैं. आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय रूपाली. ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. अब कितने बताने हैं वी डोंट नो, तो इससे आप मार्क्स से आइडिया ले सकते हो कि अच्छा इतने बताने होंगे. वैसे देखते हैं. रूपाली इंटेंड्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज that produces chocolates. Initially, in order to assess the taste and preferences of the people about the chocolates, she used social media and online surveys. Thereafter, she prepared a detailed SWOT analysis of her enterprise to devise a strategy that will give her an edge over the competitors. यहाँ पे functions of marketing भी पूछा है, तो SWOT analysis किस में आता है? Very good. Based on her analysis of the market, she decided to launch sesame and jaggery based chocolates under the brand name Desi Delight. Okay, बच्चे अगर ब्रांड की बात हो रही है तो which element? Product, because product में ये branding, packaging, labeling आते हैं. She has decided to fix up the price of chocolates relatively at lower level in the beginning, and later on, as the demand picks up, she may revise the prices. Which element? और अगर आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बताने हैं बच्चे, तो एक तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली ब्रांडिंग और प्राइसिंग भी आप बोल सकते हैं, फंक्शंस में वो भी है. और इन्होंने एक और दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट.
यहाँ पे कहाँ से पता लग रहा है हमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ से एज ओवर द कंपेटिटर्स। वैसे इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, ज्यादा प्रोमिनेंट तो है ब्रांडिंग, प्राइसिंग और वो गैदरिंग वाला पॉइंट, बट स्टिल विल जस्ट रीड इट वंस। कंपेटिटिव एज, यस, कंपेटिटिव एडवांटेज वर्ड, तो एक एक वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, इसको मार्क करो, कंपेटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। ओके ओके, सो बट इफ आई वर एट योर प्लेस, इसमें मैं आंसर लिखती एक तो ब्रांडिंग, प्राइसिंग और गैदरिंग आउट ऑफ द फंक्शंस। ओके, आगे देखते हैं। सो वी हैव मेनी मोर क्वेश्चंस, कितने भी कर लो क्वेश्चंस तो। ओके, इसमें हमें बताने हैं 2 डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं, मार्केटिंग फिलॉसफीज। The fancy store is a popular retail shop dealing in all kinds of fashionable items. Harish, the owner of the store, believes in pushing the sale of his products through aggressive sales promotion techniques. ध्यान रखना यहाँ पे, aggressive sales promotion techniques. Therefore, throughout the year, he keeps offering various kinds of short-term incentives to the buyers like discounts, quantity gifts, product combinations, etc. On the contrary, his brother Ramesh, who also runs a retail shop dealing in all kinds of fashionable items in the nearby market, tries to first assess the needs and wants of the buyers while deciding upon the product range. तो ये भी ध्यान रखना. He also believes in building long-term relations with the buyers and therefore offers only good quality products and handles the complaints of the buyers, if any, with politeness and patience. 2 different marketing concepts because Harish is using different one and Ramesh is using a different one. Tell me which concept is Harish using and which concept is Ramesh using? Correct. Correct. So selling and marketing. फिर वो कह रहे हैं कि इन 2 कॉन्सेप्ट्स में आप डिफरेंशिएट करो इनके मीनिंग, स्कोप और स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे। तो डिफरेंस लिखोगे तो टैबुलर फॉर्म में लिखो और दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास वी हैव द कंटेंट फॉर दैट, वी नो अबाउट दीज। यस, जैसे स्कोप है, स्कोप में आप बोलोगे कि भाई सेलिंग का नैरो स्कोप होता है, मार्केटिंग का वाइडर स्कोप होता है। मीनिंग तो आप बता ही दोगे, सेलिंग में हम सिर्फ सेलिंग द प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं और उसमें हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करते हैं। और स्ट्रैटेजीज यूज्ड, इसमें हम अग्रेसिव प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हम मार्केट को असेस करते हैं, कस्टमर्स नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिल करते हैं। लाइक देयर वाज अ पॉइंट, आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट। यस, ओके, यहाँ पे देखते हैं। सो हियर वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रमोशन मिक्स का टूल। तो टूल आपको पता है पैप्स में से बताना होगा, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस या सेल्स प्रमोशन। Soumya Patel, 35, a fitness trainer, was about a popular consumer durable brand, saying that they show a lot of advertisements for their products on television, but when you go to the store, you find these things out of stock all the time. Then why should the company put advertisements when they can't meet the demand? She questions. Identify the tool of promotion being referred to in the above lines. Keep it easy. Advertising. List any 2 product related factors that are likely to affect the choice of, अच्छा ये अब आपके syllabus में नहीं है, the choice of channel के factors. You have the channels की direct channel or indirect channel but not the choice. Then we have which element of marketing mix is being overlooked by the company. Element यानी कि आपको पता है product price place promotion. Why is it considered as an important element? अच्छा, इन्होंने दिया है
प्लेस, यस, बिकॉज वो कह रही थी कि सारी चीजें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, फिर आप एडवर्टीजमेंट में दिखा देते हो, डिमांड तो मीट कर नहीं पाते. विच एलिमेंट इज बीइंग ओवरलुक्ड? गुड क्वेश्चन. विच प्लेस? एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हैं, जो प्रमोशन उनको समझ में आई वो कर रहे हैं, बट what they are overlooking is that the product is out of stock most of the time. So जो होता है availability of the product at the right place, in the right quantity at the right time, that is being overlooked, right? Okay, then short case study, identify the function of marketing. ठीक है, वो देख लेंगे. State briefly the two factors that he is taking into consideration while performing the function. Suraj is a small entrepreneur involved in the manufacturing of hair wax. He finds the cost of production of 100 grams of hair wax is rupees 250. He has decided to keep a margin of 15% as profit. Moreover, he has assessed that there is a free competition in the market segment. Which function of marketing? Very good. Or factors which he will consider when he decides the price, ये भी हमारे syllabus में है. तो tell me which two factors he is considering. It's easy. Free competition in the market, in the product segment. Correct. So we have product cost and extent of competition in the market. Correct? Are you able to recall? ठीक है विषय. चलिए, तो ये थी हमारी रिवीजन. डिड इट हेल्प यू? ओके.